you will be knowing and remembering. जहाँ पे लगेगा कुछ नया आ रहा है, कुछ miscellaneous हो रहा है, wherever you find anything that you are not able to recall, वहाँ पूछना, मैं story explain करूँगा और कुछ additional facts हम add करेंगे. Otherwise we will just read this for your quick recall और बीच बीच में मैं जो questions पूछूंगा उसके answer दोगे. So I hope you remember this, that the commercial contacts between India and Europe were very old via the land route, either through the Oxus Valley or Syria or Egypt. ये old silk route है. अब अगर वो old silk route लिखने की बजाय Oxus Valley और Syria और Egypt लिखते हैं, you can handle this. इसमें कुछ नया तो ऐड नहीं हो रहा ना कि या तो वो old silk route था और it was Oxus Valley, Syria और Egypt की तरफ से ये trade route चलता था जो oldest time से चला आ रहा है, from the times of the Romans and the trade with Chira, Chola and Pandyas वाला time है जो. Then the new sea route via the Cape of Good Hope was discovered by Vasco da Gama in 1498. ये तो straight on fact है Vasco da Gama का. Now thereafter many European trading companies came to India and established their trading centers. They entered India as traders at the outset, but by the passage of time indulged in politics of India and finally established their colonies. अब इसमें British, Dutch, Danes सारे आगे आ जाएंगे. See, in first good 20-25 minutes हम सारा रिकॉल कर लेंगे जो तब हमने 2-2.5 घंटे की क्लास में पढ़ा था. फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, फिर हम उसके बाद मिसलेनियस फैक्ट्स ऐड करेंगे, फिर दोबारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा. राइट, आज इस लेक्चर में यूरोपियंस भी आ जाएंगे और ब्रिटिश कंक्वेस्ट भी कंप्लीट होगी अप टू पंजाब सिख वॉर्स. डन, ताकि हम इसको फास्ट पेस पे रिवाइज करते जाए. कल से तुम्हारे टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्लास में आते यू विल सिट फॉर अ टेस्ट. और टेस्ट सबके लिए कंडीशन रहेगी, बीट ऑनलाइन ऑफलाइन, तुम सब मोबाइल पे टेस्ट करोगे. आई वांट टू कीप अ रियल टाइम रिकॉर्ड ऑफ एवरीवन कि किसके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए. वो मेरे पास ऐप पे सबका नाम और नंबर आ जाएंगे. आई वांट टू कीप अ ट्रैक ताकि मुझे पता हो किसके किस टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं. और दो चीजें हैं. नाउ व्हाई आई वांट एवरीवन टू गिव टेस्ट ऑनलाइन. एक तो मैं उसके बाद तुम सबको कंपैरेटिव रिजल्ट दे सकता हूँ कि वेयर यू स्टैंड अमंग्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल, 50-60 आर सिटिंग हियर एंड 125 ऑनलाइन. तो वी आर अबाउट 200 स्टूडेंट्स. ऑलरेडी 300 के आसपास स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं. सो वी एक्सपेक्ट कि विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज स्टूडेंट्स विल इंक्रीज. तो इफ यू हैव अ स्कोर ऑफ कंपैरेटिव 400-500 स्टूडेंट्स की वेयर यू स्टैंड, यू कैन इजीली देन अंडरस्टैंड कि उस लॉट में तुम कहाँ स्टैंड करोगे. 500 में से अगर तुम 5 नंबर पे हो तो 5000 में से 50 पे आ जाओगे. और अगर 50,000 बच्चा प्री देगा तो तुम 500 नंबर पे आ जाओगे. सो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स लाइक दिस. Right. Then the commercial rivalry among the European parts led to political rivalry. Ultimately, British succeeded in establishing their rule over India. Sir, British और French की rivalry को लेकर there were 3 wars. By what name we call them? और कोई बीच में बोलेगा नहीं, जिससे मैं पूछता जाऊंगा सिर्फ वो आंसर करेंगे. And online students need not worry, you will be equally a part of the session, but there is no need to type before I ask the question to you guys. याद है सर? ब्रिटिश एंड फ्रेंच की 3 लड़ाइयां हुई हैं टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया. वी कॉल देम 3 कर्नाटिक वॉर्स. वेरी गुड. तुमने तो मॉडर्न इंडिया भी किया नहीं, नो वरीज. तुमने तो किया हुआ सर. वेरी गुड. 3 कर्नाटिक वॉर्स में से फर्स्ट कर्नाटिक वॉर किस साल में स्टार्ट हुई? हाँ जी मैम. 1745-46. डन. फर्स्ट कर्नाटिक वॉर किया हुआ ना मॉडर्न इंडिया. पेपर तो अब आना है. क्वाइट नियर, नेवर माइंड. याद है कर्नाटिक वॉर फर्स्ट किस ट्रीटी से खत्म हुई थी? ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल. वेरी गुड. सेकंड कर्नाटिक वॉर कब शुरू हुई? आपको याद है सेकंड कर्नाटिक वॉर कब स्टार्ट हुई? कुछ नहीं पक्का. (1749). सेकंड कर्नाटिक वॉर किस ट्रीटी से खत्म हुई? आपको याद है मैम? आपको याद है मैम? सेकंड कर्नाटिक वॉर एंडेड विद विच ट्रीटी? हाँ जी सर. चलो जी मैम तुम बोलो. ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी. अब पेपर में क्वेश्चन तो सारे ट्रीटीज पे आए हुए हैं. पास्ट ईयर पेपर्स अगर उठाओगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन ट्रीटीज. अब ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन एंड नोबडी विल बी टाइपिंग इट. एज आई सेड, अभिषेक, नेमा, आई एम गिविंग यू माइक, प्लीज क्विकली स्विच इट ऑन. और जिस स्टूडेंट ने माइक ऑन नहीं किया उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा. आई विल नेवर गिव देम अ चांस अगेन. अभिषेक.
अभिषेक सर, लास्ट कॉल। अभिषेक, इससे ज्यादा वेट इम्पॉसिबल है यार। ऑल राइट, अबे दीपक, आई एम गिविंग यू माइक। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सॉरी सर। अबे थर्ड कर्नाटिक वॉर किस साल में हुई थी और किस ट्रीटी से खत्म हुई? सॉरी सर, याद नहीं है सर, ध्यान में नहीं है सर। 58 ट्रीटी ऑफ पेरिस। ओके ठीक है। सर। अब इसके बाद बीच बीच में मैं दोबारा से क्वेश्चंस पूछता रहूंगा। प्लीज बी रेडी एंड नोबडी विल टाइप अनलेस आई आस्क देम, बिकॉज आई विल बी गिविंग यू माइक टू स्पीक अबाउट। ऑल राइट, अभी ये सारे टॉपिक्स क्विकली रिवाइज करवाने आज तुम्हारे साथ। अब ये वाला मैप तुम सबने देखा हुआ है, ये पोर्टुगीज की इंपॉर्टेंट कॉलोनीज इन इंडिया, राइट? सिर्फ पोर्टुगीज की, क्योंकि पिछले 10 सालों में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है स्पेसिफिक साइट के ऊपर। दे हैव आस्क्ड ट्वाइस कि ये बताओ किसकी कॉलोनी थी, मैच द फॉलोइंग में। सो ये पोर्टुगीज की इंपॉर्टेंट कॉलोनियल पोजेशंस इन इंडिया या उनकी सेटलमेंट्स इन इंडिया है। इसको साउथ में ईस्टर्न साइड से स्टार्ट करते हैं। एक इनके पास मसूलीपट्टनम है, ठीक है, पुलिकट है, देन मलप्पुर है, नागापट्टनम है, टुट्टिकुरिन है, उसके बाद कोलम है, कोचीन है। अब ये बहुत सारी हैं, इतनी याद करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। व्हाट वी विल डू, मैं तुम लोगों को एक स्लाइड और दूंगा जिसमें सबकी 4-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज के नाम होंगे, तुम्हें वो याद करने। दैट इज इट। ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू विल सर्च ऑन नेट यू विल गेट दीज काइंड ऑफ मैप्स एंड इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि तुम्हें सारी फैक्ट्रीज याद हो जाए। ब्रिटिश की इंस्टेड ऑफ 4 देयर विल बी अबाउट 10। फ्रेंच, डच, डेन्स और पोर्टुगीज, इनकी मैं तुम्हें 4-4 फैक्ट्रीज के नाम दूंगा। अगर वो याद कर लिए सफिशिएंट है। एंड कीप दिस इन माइंड, इफ यू आर नॉट नोइंग द आंसर नोबडी विल बी नोइंग द आंसर, क्योंकि कोई भी इतनी फैक्ट्रीज याद करके नहीं बैठा होगा। नाउ लुक एट दिस, ये वाली फैक्ट्रीज के नाम याद करने, इट विल टेक हेल लॉट ऑफ अ टाइम एंड वी जस्ट कैन नॉट वेस्ट ऑल द टाइम रिमेंबरिंग दीज कॉलोनीज और सेटलमेंट्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आने के चांसेस भी 10% से कम है। डन। अब मूविंग फर्दर, अब पोर्टुगीज की बात करते हैं। इनमें से आई विल बी अगेन आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस। Portuguese Vasco da Gama reached Calicut in 1498 and was received by Zamorin, the ruler of Calicut. So can anybody tell me the name of the ship? There were 4 ships in which Vasco da Gama came. The ship in which he himself was traveling. उस ship का कोई नाम बताएगा मेरे को? The ship in which he himself was traveling. Sao Gabriel. जिनको नहीं पता वो बताओ ताकि मैं डिक्टेट करूं। नहीं पता लिखो। Sao Gabriel is the name. SAOGABRIAL. Shrey, yaar, why have you raised hand? Please type it and then I will give you the mic if it is relevant. Sao GABRIEL. Sao Gabriel was the name of the ship which he himself commanded. Which he himself commanded. Vasco da Gama. अदरवाइज 4 शिप्स का क्रू था, उनमें से ये उसके खुद के कंट्रोल में थी शिप। ऑल राइट, देन वी हैव पेड्रो अल्वेज कैब्रल। ही केम इन 1500 एंड वास्को ड गामा मेड अ सेकंड ट्रिप इन 1502। तो 3 ट्रिप बैक टू बैक हुए हैं। 1498 वास्को ड गामा, 1500 कैब्रल, 1502 वास्को ड गामा केम फॉर द सेकंड टाइम। आई होप यू ऑल रिमेंबर 3 ट्रिप्स क्यों हुए हैं, because they wanted to see that whether this trade route is optimally safe and useful or not. एक ट्रिप से कभी कंफर्मेशन नहीं हो सकती थी that if we take up the new sea route, we reach India, we buy products, we come back and we make profit out of it. So 3 trips make it like head tail head कर लिया. Now they are sure that trade is profitable. They established trading stations at Calcutta, Kannanur and Cochin. पहले तो तुम्हें ये 3 साइट्स याद करनी है, जो मैं कह रहा हूँ स्पेशल स्लाइड दूंगा। ये 3 साइट्स प्लस गोवा इसमें ऐड होगा, तो ये 4 साइट्स होंगी जो तुम्हें पोर्टुगीज के लिए याद रखनी है। उस मैप में से तुम इन 4 के ऊपर टिक कर लेना अब जाकर। जैसे कि इफ आई से कैलिकट, कोचीन, गोवा एंड कनानौर, तो इसमें निकाल देना ये इंपॉर्टेंट साइट्स। हियर वी हैव गोवा, हियर वी हैव कनानौर, हियर वी हैव कैलिकट एंड हियर वी हैव दैट 4th साइट मसूलीपट्टनम थी ना,
कोचीन, हियर वी हैव कोचीन। तो चारों इसी साइड पे है। ये 4 साइड्स तुम्हें याद रखनी है, इनकी इस तरफ की साइड्स को याद भी मत करना चाहिए। डन। सो दीज आर द 4 साइड्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर फॉर पोर्टुगीज इन इंडिया। अब इसके बाद ना एक चीज और तुम्हें याद रखनी है, अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन वो बनाने की कोशिश करते हैं, वी ऑल नो दैट बॉम्बे वाज गिवन टू द ब्रिटिश बाय पोर्टुगीज इन डोरी। तो बॉम्बे तो याद रहेगा ना, दैट ओरिजिनली बॉम्बे वाज विद द पोर्टुगीज, देन दे गिफ्टेड इट टू द ब्रिटिश, राइट। एक ये चौल है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो एरिया जहां से मराठाओं का राइज हो गया और इस एरिया में पोर्टुगीज को वीक कर दिया गया। ये 2 साथ में तुम्हें याद रखनी है। इन दिस एरिया, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ मराठास चौल एरिया से अराउंड एरिया में, सो इट फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज फॉर्च्यून्स इन इंडिया। अगर तुम्हें ये सारी साइट सब याद रही, सारी की सारी वेस्टर्न कोस्ट की साइट है, बॉम्बे, चौल, गोवा, कनानौर, कैलिकट, कोचीन। तो नीचे सी है। अब तुम्हें इसका सीक्वेंस याद रखना है। अगर वो टफ क्वेश्चन भी प्लान कर दे कि मैप पे क्लिक करके ना 1 2 3 करके और डॉट्स आगे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया, तो वो कैलिकट है। विच वाज द फाइनल कैपिटल, तो वो कौन सी है, वो गोवा है। गोवा वाज द फाइनल कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल और हेडक्वार्टर वाज कैलिकट। तो तुम्हें ये डॉट्स लगा के याद रखना। तो एक मैप बनाना खुद ही फ्री हैंड के साथ, उसके ऊपर 5 डॉट्स लगाना, 6 डॉट्स। बॉम्बे से स्टार्ट करना, बॉम्बे, चौल, गोवा, कनानौर, कैलिकट, कोचीन, ये याद कर लेना। और रादर बनाना क्या, अभी बना दो। लेट्स डू इट राइट नाउ। कोचीन है, मुझे भी पता लिखवाया हुआ है, वही तो वेट कर रहा हूं। लिखवाया हुआ ना क्लास में, लिखते जाओ बस। ये बनाओ मैप फ्री हैंड से, और पूरा मैप बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्या करना है, बस इतना बना के यहां से शुरू कर दो। बॉम्बे, बॉम्बे के नीचे चौल, चौल के नीचे गोवा, देन कनानौर, कैलिकट, एंड उसके बाद कौन सा मिस कर गया हूं मैं, गोवा हो गया, कोचीन, लास्ट में कोचीन। ये बस यहाँ पे लोकेट कर लो। ये यहाँ पे याद हो जाएगा, इस सीक्वेंस में याद कर लोगे इसको। आई होप यू कैन रिमेंबर नाउ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे के बाद चौल, गोवा, गोवा के बाद वी हैव कनानौर, कैलिकट एंड कोचीन। ये इस तरह याद करके अब 2 चीजें दिमाग में बिठा लो फॉर यूर प्री। अगर वो ईस्टर्न साइड पे बात करते हैं, सो ब्रिटिश के लिए भी द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स वर दीज 2। पोर्टुगीज के पास थी जो बाद में ब्रिटिश ने एक्वायर की है। वन इज चिट्टगोंग, बांग्लादेश में प्रेजेंट डे, और दूसरा हुगली, वेस्ट बंगाल में। सो ये 2 उस तरफ बना दो। अच्छा, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ एंड वी हैड टू आस्क द पोर्टुगीज टू लीव इंडिया अलोंग विद गोवा, एक और टेरिटरी थी जो उनके कंट्रोल में थी, वो कौन सी थी? यहां देखो, दमन, दादर नगर हवेली, दीव, ये भी उन्हीं के पास था। और ये अप टू इंडिपेंडेंस उनके पास रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। हाँ जी, गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली, राइट, जो यूटीज हैं, ये उनके पास था। तो ये तो वैसे ही ऑड मैन आउट है ना, ये तो तुम्हें याद ही रहना चाहिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी उनके पास था, तो पहले ही उनकी टेरिटरीज है। तो वेस्टर्न कोस्ट की तो तुम्हारे पास सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं। एक लास्ट चीज बचती है, ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री कहां लगी? मराठा किसके लिए लड़े? मुगल्स किसके लिए लड़े? तो पोर्टुगीज के पास भी तो होनी चाहिए सूरत। सूरत तो हमेशा क्रूशियल रहा है इंडियन हिस्ट्री में। औरंगजेब के साथ शिवाजी लड़े हैं, सूरत पे प्लंडर किया गया। सूरत हैड ऑलवेज बीन क्रूशियल। अब सूरत इतना क्रूशियल क्यों है, लॉजिक यहां पे आता है। दे मे आस्क व्हाट वाज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ सूरत, व्हाई एवरीबॉडी वाज आफ्टर सूरत। देखो, सूरत की रेलिवेंस के लिए, ओके ठीक है, सूरत की रेलिवेंस के लिए आई विल गिव चांस टू वन ऑनलाइन स्टूडेंट।
अजय सिंह, अजय, कैन यू ट्राई? अजय सिंह, अक्षत चौधरी, थैंक यू अजय। हाँ जी अक्षत, अक्षत आपका माइक ऑन है। ऑलराइट, चलो, इफ दे आर नॉट टेलिंग, एक चीज याद रखना, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द मुगल्स और समटाइम बिफोर द मुगल्स एज वेल, सूरत वाज द मेन पोर्ट जहां से मुस्लिम पिलग्रिमेज टू मक्का होता था। दैट वाज द मेन पोर्ट बिकॉज सारे मुस्लिम्स विल कम टू सूरत फ्रॉम वेयर दे विल देन सेल फॉर देयर पिलग्रिमेज टू मक्का। नाउ बिकॉज इट इज अ प्लेस वेयर ऑल द मुस्लिम्स आर कमिंग एट वन पॉइंट, सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक बड़ी मार्केट तो डेवलप होगी, right? Because there was a huge market, it was a big commercial center. So that was the biggest reason for the growth, commercial growth of Surat, because this was the main shipping dock for pilgrimage to Makkah Medina. हज के लिए यहाँ से स्टार्ट करते थे। इसीलिए अकबर ने भी फाइनली जब गुजरात की कंक्वेस्ट की है और उसके कंट्रोल में सूरत आ गया, गल्फ ऑफ कैम्बे वगैरह सारा एरिया आ गया, सो अकबर वाज सो यूफोरिक कि यार मेरे पास गुजरात आ गया, मेरे पास सूरत का कंट्रोल आ गया। सो अकबर इसको कैसे सेलिब्रेट करेगा? हाउ वुड अकबर सेलिब्रेट दिस कॉन्क्वेस्ट? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनेगा टू कमेमोरेट अकबर्स कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात। इतना इंपॉर्टेंट था ये उस टाइम पर हिस्ट्री में। सो यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट अबाउट अकबर एज वेल कि अकबर सेलिब्रेटेड हिज कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात by getting constructed बुलंद दरवाजा at Fatehpur Sikri. Akbar commemorated this conquest of Gujarat by getting बुलंद दरवाजा constructed at Fatehpur Sikri. अगर मैं अकबर की बात करूं और गुजरात कंक्वेस्ट की बात करूं, कुछ और याद आता है जो यूपीएससी पूछती हुई है, पूछा गया ऑलरेडी पास्ट में? एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू योर माइंड? अकबर जो है उसके जो एंसेस्टर्स हैं, बाबर उज्बेकिस्तान की तरफ से आ रहा है, हुमायूं सिंध की तरफ घूमता रहा, और बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर का बर्थ राजपुताना में हुआ, उसके बाद वो पानीपत में आके लड़ा और फिर वो दिल्ली में तक पहुंचा। आज अकबर गुजरात आ गया, वो कुछ नया देखेगा विच हैज नेवर सीन बिफोर, ना ही उसके किसी फैमिली मेंबर ने देखा है, दैट इज सी। अकबर फर्स्ट टाइम सॉ द सी ड्यूरिंग हिज गुजरात कैंपेन। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, राइट? कुछ भी पूछ लेते हैं वो लॉजिक के ऊपर कि अकबर ने पहली बार सी कब देखा। शुक्र कर लो ये नहीं पूछा सन बात कब लिया। ये अकबर सूरत में गया और सन बात ले लिया बिकॉज समुद्र किनारे आ गया। अब तो फैक्ट्स याद रहेंगे ना? अब सन बात मत लिख देना मेंस में जाके। एक बार मैं बच्चे का आंसर पढ़ा था, अकबर हैड अ सन बात एट सूरत, और नहीं फिर लोग पूछते हैं राज सर क्या ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब पोर्टुगीज में वापस आते हैं। अब वास्को डी गामा के ट्रिप हो गए, फैक्ट्रीज हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए। फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया वाज फ्रांसिस डी अल्मेदा, ये नाम तो सबको याद है, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ब्लू वाटर पॉलिसी। पुत्र जी याद कराओ, व्हाट इज ब्लू वाटर पॉलिसी? काइंड ऑफ कार्ड सिस्टम, बट व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लू वाटर पॉलिसी? वो तो कार्टजेस सिस्टम हो गया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी है, उसका एक डायमेंशन है कार्टजेस सिस्टम। ब्लू वाटर पॉलिसी है दैट सी एज पोर्टुगीज वी रियलाइज टू थिंग्स। वी हैव कम टू अ वेरी फार ऑफ प्लेस, है ना, यूरोप से उठ के हम इंडिया आ गए हैं फॉर ट्रेड पर्पसेस। नाउ व्हेन वी हैव कम हियर इट्स अ ह्यूज लैंड मास एंड वी डू नॉट हैव द मैचिंग ह्यूमन रिसोर्स विद अस। हाउ मच डीप इनसाइड दिस सबकॉन्टिनेंट वी कैन पेनिट्रेट? जितना अंदर जाते जाएंगे we have to fight wars, then we need lot of army, and if we get involved in all these wars then there will be lot of expense on the army maintenance and wars, so trade will be hampered. So let's do a thing. प्लान क्या करते हैं कि हम इंडिया में कोस्ट लाइन को कंट्रोल कर लेते हैं। लेट्स स्टे नियर द ब्लू वाटर।
समुंदर को कंट्रोल कर लो, वट एवर यू हैव टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया करना तो सी रूट से ही है, तो समुंदर के किनारे बैठ जाओ. वाई टू गो डीप इनसाइड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड फाइट वॉर्स? स्टे ऑन द कोस्ट लाइन एंड मेंटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस. If your navy is strong, then nobody can challenge you. Now that you have maintained the blue water policy as long as and efficiently manage your navy, nobody could compete you in the oceans. Now, because you are strongly present in the water, you can come up with the Karzai system. कि भाई अगर तुम्हें इंडियन ओशन में ट्रेड करना है, any other player, be it Indian or Europeans, if you want to trade here, you have to first seek a license from the Portuguese. If we give you license under the Karzai system, then you can trade. Otherwise, there will be open war in the sea. And if you fight, we have an advantage. Now, what advantage we, the Portuguese, had? We were the first to introduce gun boats in Indian Ocean. अपनी boats के ऊपर guns लगा के आए थे, cannons लगा के, and with this, cannons became very popular in India. But remember, they were not introduced by the Portuguese in India. Who brought the cannons? अच्छा, पोर्टुगीज कब आ रहे हैं? 1498 1500 में. बाबर कब आ रहा है? 1526 में. कल तो गया ना, ये तो फैक्ट. बाबर ने पॉपुलराइज कर दिया, मेड पॉपुलर. पोर्टुगीज ने उससे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया है, बट फर्स्ट टू ब्रिंग इट इन इंडिया वर वेरी गुड विजयनगर एम्पायर. ठीक है, मेड पॉपुलर बाय बाबर, क्योंकि उसने इंडिया के अंदर लाके यूज कर दी. अदरवाइज कोस्ट लाइन पे पोर्टुगीज ने दिखाई है, ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर. Navneet on YouTube. I hope you got your answer. Babur made it popular in India, but he did not introduce. Portuguese have brought much before him, and before Portuguese, Vijayanagar Empire was using it. And Cholas has a great army, but Cholas did not have cannons on the ships, or they did not make cannons popular in India. So I think Shahid, oh tera bhala ho jaye, Shahid Azam. Are you sure this is your real name? Cholas did not make them popular. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब जितने मिसलेनियस फैक्ट्स आज ऐड हुए हैं अभी तक, कोई ऐसा फैक्ट जो तुम्हें लग रहा है बिल्कुल ही नया है और जिसके बारे में सुना नहीं था, या जिसको अब याद करना मुश्किल है? ऐसा कोई फैक्ट? एंड क्विक फ्रॉम दिस साइड, क्या ऐड किया आज अभी तक इन फर्स्ट 20 मिनट्स? ऑन दिस साइड व्हाट न्यू वी एडेड? एक फैक्ट, बाकी सब लिखा हुआ था सेम. सूरत की इंपॉर्टेंस इस तरफ, ऑलराइट. इस तरफ कुछ ऐड हुआ इसके अलावा? क्या? नेम ऑफ द शिप साउ गैब्रियल. ऑनलाइन तुम लोग क्या किया? ठीक है, डन है. अभी आज तुम्हारे को बहुत सारे नए फैक्ट्स भी देके भेजना है और बड़ा कुछ यहाँ पे याद करा के भी भेजना है, फिर टेस्ट भी करने हैं. सो यहां तक हो गया ब्लू वाटर पॉलिसी तक. ब्लू वाटर पॉलिसी से आगे क्या है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया वाज फ्रांसिस डी अल्मेडा. इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग सुपीरियरिटी एट सी टू प्रोटेक्ट पॉलिटिको इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑन लैंड. अगर अपने आप को कंट्रोल कर लिया सी पे स्ट्रांगली थ्रू अ नेवल प्रेजेंस, देन यू कैन कंट्रोल द एंटायर ट्रेड. And in 1509, Alfonso de Albuquerque was made the governor of Portuguese territories in India. And this man then in 1510 captured Goa from ruler of Bijapur. Who were the rulers of Bijapur? किसको याद है रूलर्स ऑफ बीजापुर? वेरी, आदिल शाह ऑफ बीजापुर, यूसुफ आदिल शाह. ही वाज द रूलर ऑफ बीजापुर. लिख लो जिनको नहीं याद. आदिल शाही रूलर, यूसुफ आदिल शाह. आदिल शाही रूलर, यूसुफ आदिल शाह was the ruler of बीजापुर at that time. अब ना एक क्विक रिकॉल करते हैं, मिडीवियल हिस्ट्री के 2-4 फैक्ट्स यहाँ पे ऐड करते हैं, ताकि जब हम मिडीवियल पढ़ रहे हो उस टाइम पे हमारी रिवीजन एक और हो जाए. सो मैम आपकी मिडीवियल हो चुकी है एएमसी? अब किसी की भी नहीं होनी आज के बाद. अब मैं जिससे पूछूंगा नहीं सर.
सर आपकी तो होगी ना, वेरी गुड। सो बीजापुर जो एम्पायर है ये फाइनल अल्टीमेटली बहामनी किंगडम का ब्रेकअप एम्पायर है। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो 5 ब्रेकअप एम्पायर बने थे बहामनी किंगडम के टूटने के बाद। कैन यू टेल मी द 5 एम्पायर्स, 5 किंगडम्स? बहामनी किंगडम। ऑलराइट सर, आपको याद है? ये तो आदिलशाही तो बीजापुर के हो गए ना, तो एक बीजापुर हो गई। कुतुबशाही कहाँ के थे? नहीं याद, आपको याद है बेटा? ऑनलाइन किसको याद है ये 5 किंगडम्स के नाम? अर्पित, फॉर वन डे इट इज लाइव एंड व्हाई यू ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चंस यार? यादव, व्हाई आई एम ऑलवेज आंसरेबल टू यू बैक? दीपक बोलो जल्दी से। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकोंडा और बीदर। वेरी गुड। अब जिनको ये नाम याद नहीं थे वो आज घर जाके इनको याद करेंगे, 5 ब्रेकअप एम्पायर्स। और मैं तुम्हें ना लॉजिक समझाता हूँ। आज तुमने एक छोटा सा काम करना है, व्हाट यू गोना डू टुडे, ताकि जिस दिन मैं तुम्हें एएमसी कराऊं उस दिन मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो तुम्हारे टिप्स पे हो। यहां लिखोगे एम्पायर, यहां लिखोगे फाउंडर, और यहां लिखोगे मुगल। अब सपोज करो हम लिखते हैं गोलकुंडा, तो उसके फाउंडर का नाम लिख दिया, और इसको औरंगजेब ने आके कैप्चर किया था। किसी को औरंगजेब करेगा, किसी को अकबर करेगा, किसी को जहांगीर, किसी को शाहजहां, उसके आगे लिख देते हैं। तो प्री में व्हाट मैक्स क्वेश्चंस दे कैन आस्क, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैच कर दो। ठीक है? अबे भाई तुम्हारी आवाज। अच्छा, अब एक तो आ जाएगा मैच करो फाउंडर्स के साथ, दूसरा आएगा विच मुगल एम्परर रिकैप्चर्ड देम अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। इसके अलावा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आता है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से ना होके दैट बिकम्स द क्वेश्चन ऑफ कल्चर। इन सारी की सारी एम्पायर्स में कोई ना कोई पेंटर, म्यूजिशियन या आर्किटेक्ट से रिलेटेड पर्सनालिटीज या प्लेसेस होंगे, वो मैं तुम्हें एंड में इसके आगे लिखवा दूंगा, वो मैं डिक्टेट कर दूंगा। डन? ये तो तुम नेट से निकाल दोगे। जैसे कि यार अगर हम बात करें कि इसी एम्पायर में कोई ना कोई आदमी आएगा जो हमारे लिए 4 मीनार बनवा देगा हैदराबाद में, कोई गोलकुंडा का किला बनवा देगा, कोई बुक लिखवा देगा, कोई म्यूजिशियन ले आएगा, कोई पेंटर्स ले आएगा, वो सारा मैं तुम्हें सामने लिखवा दूंगा, वो कल्चर का पार्ट होगा। डन? तो इतना तो लिख लोगे। वैसे मैंने ये भी नोट बनाया हुआ है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उस दिन जब मैं कराऊं सो इट मस्ट नॉट बी एनीथिंग एलियन टू अस, तो तुम्हें मैं आइडिया दे रहा हूं, ये बना लेना 5 एम्पायर्स के बारे में। ऑल राइट, अब आती है अगली बात। देयर आफ्टर गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज सेटलमेंट इन इंडिया। अब आती है बात, अल्बुकर्क कैप्चर्ड मलक्का एंड सिलोन, ही ऑल्सो बिल्ट अ फोर्ट एट कैलिकट। अब मलक्का और सिलोन को कैप्चर करके द एंटायर सी रूट जो इंडिया का था दैट वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द पोर्टुगीज, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अल्बुकर्क का ये पॉइंट याद रखना, मलक्का एंड सिलोन वाला। Because he did this, that he captured Malacca and Ceylon as well, तो वो पूरा सी रूट इनके कंट्रोल में आ गया। Now they master the entire stretch of sea, so he left Portuguese the strongest naval power in India. So the credit of making the Portuguese strongest naval power in India goes to their governor Albuquerque. Done? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पर्सनालिटी बेस्ड होगा, who made them the greatest naval power? It will be Albuquerque. Later Portuguese established themselves at Daman, Salsette and Bombay on the west coast and Saint Tom near Madras and Hooghly in Bengal on the east coast. ये सारी मैंने ऑलरेडी तुम्हें मार्क करवा दी, इंपॉर्टेंट फैक्टरीज इनकी। To maintain superiority at sea, Portuguese introduced Karzai system. I have just explained that licensing system है, which involved all ship trading in Indian waters to stop, take permission and pay customs duty to the Portuguese at Goa, because Goa is the headquarters. Now through this mechanism of issuing licenses, they basically not just monopolize the trade, they made their profits grow enormously without making additional investments. Now let's take an example. If the pepper trade is something that is the most profitable, I am not going to give you the license in pepper trade. That will be my exclusive monopoly, because I will make all profits independent of it. Now, second thing, let's say it is about the cloths only. So India is not producing enough of clothes. So if you want to trade in that, you have to seek a license from me, and I will, according to the amount and the volume of trade, fix the license fees, whereby I will take a
percentage or a share of your trade without getting directly involved into it. So in any what way, I have monopoly as well as additional profits by the Karzai system. And now, because I have the best navy, best naval presence in the Indian Ocean, nobody can challenge me. Whosoever will challenge have to fight a naval war. So unless any other European will now develop the navy of the capability of the Portuguese, none of them will enter into Indian trades. Because from 1498 to 1600, for good almost 100 years, no other European can compete against the navy of the Portuguese. Then with whom they would have been fighting in the Indian Ocean? लड़ किसके साथ रहे होंगे मेनली? किसके साथ लड़ेंगे? या तो इंडियंस होंगे, फॉरेनर्स कौन होंगे? Ottoman Empire. The Ottoman Turks, they were trying to capture the sea routes all over the world. So they were also trying to venture towards Indian Ocean. So Portuguese and the Ottoman Turks, they were the main competitors during those first 100 years. And with the coming of British, Dutch, Danes, and the French, and the weakening of the Ottoman Empire, now the entire competition was among the Europeans from 1600 onwards. So from 1498 to 1600, the competition mainly was between the two, the Ottomans and the Portuguese. Done. अब ये फैक्ट याद रखना, पहले 100 साल में they were not fighting other Europeans, they were fighting against Ottomans, the Turks. और टर्क्स के साथ लड़ने के दो कारण हो गए. अब ओल्ड सिल्क रूट टर्क्स ने ऑलरेडी मोनोपोलाइज कर लिया विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453. अब ऑटोमन टर्क्स चाहते हैं कि हम सी रूट को भी मोनोपोलाइज करें, बट वो मोनोपोलाइज कर लिया पोर्टुगीज ने. सो ऑब्वियस रीजन है पोर्टुगीज और ऑटोमन्स के बीच में लड़ाई का. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट इन इट? सर कौन से 5 एम्पायर का बनाना है विजयनगर वाली? बेटा विजयनगर नहीं, बहामनी का है. एंड बहामनी में यार हाउ मच ऑफ द हिंदी आई एम स्पीकिंग? क्विकली टेल मी यार. ज्यादा बोल रहा हूँ हिंदी में यार. हिंदी में सिर्फ आई एम स्पीकिंग हिंदी ओनली व्हेन आई रिपीट द थिंग्स. आई डू नॉट स्पीक हिंदी इन द फर्स्ट इंस्टेंस. राइट गायत्री? इज इट ओके गायत्री? I just repeat the things in Hindi, otherwise I am just speaking in English, don't worry about it. So it was the Turks and the Ottomans. Now there is one international event which is again important for us to know because indirect questions can be asked. Which was the international event which proved to be a turning point to prove that British are a superior navy? Anji? Very good. British Navy defeating Spanish Armada, 1588, right? When the British Navy defeated the Spanish Armada, then the British Navy started to be reckoned as one of the most formidable navies internationally. And from 1588 up to World War I, British Navy remained the most formidable navy. And then who competed the British? The Germans, after German unification under Bismarck, right? And then after World Wars, it is American Navy which is considered to be the best, now being competed by the Chinese. Clear हो गया? So Spanish Armada की defeat 1588, whereafter British Navy overtook the credit of being the strongest navy internationally. ये डच की फैक्ट्रीज है. द चीफ फॉरेन सेटलमेंट्स इन इंडिया एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी. इसमें सबकी एक बार पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, डेन्स की इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज दी हुई हैं. अगर तुम्हें देखना हो तो एक बार ये मैप भी देखना. एज आई सेड, आई विल शेयर इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द स्टूडेंट्स. नाउ वी टॉक अबाउट डच. डच कंपनी 1602 में बनी थी. अब कमिंग टू द बेसिक फैक्ट, डच कंपनी बनी है 1602 में, ब्रिटिश कंपनी बनी है 1600 में. बट द डच वर द फर्स्ट टू कम. नो, ब्रिटिश केम फर्स्ट. तो मैं एक बार फिर से तुम्हें लिखवा देता हूं सो दैट यू शुड रिमेंबर दैट फैक्ट. इफ दे आस्क मेकिंग ऑफ कंपनीज एंड दूसरा कमिंग टू इंडिया, ये दो चीजें हो गई. सो मेकिंग ऑफ फैक्ट्रीज में पोर्टुगीज वर द फर्स्ट
then there were the British, then there were Dutch, then there were Danes, and finally the French. Whereas coming to India, obviously, yes, Portuguese were the first, followed by Dutch. The British did make the company, but they got delayed in coming to India. Then Dutch were followed by British, then the Danes, and then the French. So if it is making of factories in Europe, it is the sequence of P, B, D, D, F. If it is coming to India, then P, D, B, D, F. Right? So ये sequence याद रखना है बस. Making of factories and coming to India. This is done. All right. So the Dutch established their settlements at, as I said, कुछ factories याद रखनी है. मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, करिकल, नागापट्टनम, चिंसौरा एंड कासिम बाजार, बंगाल वाला. ये factories के नाम तुम्हें याद रखने हैं for Dutch. The 17th century they won over the Portuguese and emerged as the most dominant power in European trade in the East. Right? Pulicat was their main center in India and later it was replaced by Nagapattinam. ये इनकी दो capitals हो गई, ये हमने already लिखी होती हैं. Pulicat के बाद in the mid 17th century the English began to challenge Dutch, and the Dutch in Anglo rivalry resulting in Dutch establishing control over the Spice Islands, Indonesia, but the English emerging as dominant power in India. So British in India, Dutch going to Indonesia. अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नए फैक्ट्स ऐड करवाने हैं. ये कुछ ब्रिटिश फैक्ट्रीज के लिए मैप निकाला है. इसके बाद ब्रिटिश, ये सारे फैक्ट्स मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूं, करवा चुका हूं, बट एक बार क्विक रिकॉल करते हैं इनका भी. So English East India Company established in 1600. Charter was issued by Queen Elizabeth I of England. ये तो याद है सारा. Then Captain Hawkins arrived at the Royal Court of Jahangir in 1609 to seek permission to establish English trading center at Surat, but it was refused by the Mughal emperor due to Portuguese pressure. Right? And the Mughals were under the impression that the Portuguese are the strongest navy, so why to annoy them by giving to these newcomers? So British were not taken seriously by the Mughal emperor Jahangir. Later in 1612, Jahangir issued a farman, permission letter to English, and they established factory at Surat in 1613. This is the first factory established, not set up. Am I right? It is the first factory set up, not established. वो तो मद्रास में बनी थी पहली फैक्ट्री. अभी वो भी आएगी आगे. Saint Sir Thomas Roy came to India as English ambassador to the Mughal court in 1615 and obtained permission from Jahangir to establish factories in different parts of India. So अगर बात हो कि फर्स्ट फैक्ट्री की परमिशन किसने मांगी और ली, हॉकिंस ने. बाकी फैक्ट्रीज की जो मुगल एम्परर जहांगीर से परमिशन मिली, इट वाज फॉर सर थॉमस रॉय. So it is only and only Hawkins who is responsible for factory at Surat and Roy for other factories from the same Mughal emperor Jahangir. Now, the English established factories at Agra, Ahmedabad, Baroda and Bharuch. Right? ये हो गई English की important factories. In 1639, Francis Day founded city of Madras, जहाँ पे finally the British developed Fort St. George. ये आ गया मद्रास में. In 1668, English East India Company acquired Bombay from Charles II. इसी को डॉरी में पोर्टुगीज से बॉम्बे मिला था. And in 1690, English factory established at Sutanati village by Job Charnock, and later it developed into Calcutta, where Fort William was built. Right? Finally, Bombay, Madras, Calcutta became three presidency towns of the English settlements in India. अब जितने important facts थे जो हमने क्लास में डिक्टेट किए हुए थे, वो सारे कवर हो गए. Saving your time. And फ्रेंच की फैक्ट्रीज, मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, कलिकल, माहे, ये हो गई इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज. फ्रेंच कंपनी फॉर्म्ड इन 1664 बाय कॉलबर्ट मिनिस्टर अंडर लुइस 14th. फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एट सूरत बाय फ्रांसिस कैनन, और फ्रांसिस मार्टिन फाउंडेड पौंडीचेरी. इट सून बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया. अदर फ्रेंच फैक्ट्रीज आर मसूलीपट्टनम, चंदन नगर, माहे एंड करिकल. तो ये तुम्हें वो मैप में दिए हुए हैं, सिर्फ तुम्हें अपने पास वैसे ही ड्रॉ करके रखने हैं. एंड नेक्स्ट क्लास ऑल ऑफ यू विल शो मी ऑल योर मैप्स हियर, एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दोस मैप्स क्विकली एंड सेंड इट टू मी थ्रू व्हाट्सएप, एंड आई होप यू ऑल हैव माय नंबर. राइट?
and nobody who is going to refrain from this will be allowed for these classes for long, irrespective that you paid your fees. Now this is your Dutch settlements, right? मेन तो यही है ना, ट्रैंक्यूबार थी और दूसरी कौन सी थी, सेरामपुर, वो ऊपर यहाँ पर, ये हेडक्वार्टर्स है. So first Danish settlement India at Tranquebar in 1620, established at Serampur in Bengal, which soon became the headquarters. They failed to strengthen themselves and sold all their settlements in India to British by 1845. So Dutch gone to Indonesia, Danes sold to British, Portuguese defeated by British, leaving behind the French, and now we come to those Anglo-French rivalries. But before that, now add some new points. ये तुम्हारे पास नहीं है, ये लिखो. पहला तो लिखो रानी अबक्का, रानी अबक्का, ABBA रानी अबक्का, ABBA. प्री के लिए बेसिक से फैक्ट्स लिखवाऊंगा विदाउट लॉन्ग सेंटेंसेस, कीवर्ड्स थ्रो करूंगा so that you remember them for your pre. First point, she is from Ullal. Place कौन सा है, उल्लाल, ULLAL. दूसरा, she first faced Portuguese. She first faced Portuguese in the 16th century. In the 16th century at Tulundu, TULU, Tulunadu, NADU, Tulunadu, TULUNADU. Now, if they ask from where she comes into picture, who is she, right? Who is this Abakka? So, agla point, she was married to King of Mangaluru, MANGALURU, Mangaluru. अब उस किंग का नाम क्या है, लक्ष्मप्पा बंगराजा, LAKSHMAPPA, लक्ष्मप्पा बंगराजा, BANGARAJA, Bangaraja. Now the story is Portuguese has captured the South Indian states, right? When they have captured the South Indian states, this area, right? Now this is the area where these people are active. Now what happens? They now started imposing new taxes on these people. So this Rani Abakka, she first provocated or instigated her husband to revolt against the unnecessary tax demands of the Portuguese, from where the war started, right? So agla point likho, start lगा के, she encouraged her husband to revolt against unreasonable tax demands by the Portuguese. Unreasonable tax demands of the Portuguese by the Portuguese. अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई इस बार? एक तो आजादी का अमृत महोत्सव में her name has been highlighted. Secondly, she has been now called as first freedom fighter. रानी अबक्का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हो गई, क्योंकि अगेंस्ट एनी यूरोपियन शी इज द फर्स्ट टू रिवोल्ट. वैसे तो इसने 6 बैटल्स लड़े हैं, बट देयर इज नो नीड टू गो इनटू द डिटेल ऑफ ऑल दोस बैटल्स, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, राइट? सो रानी अबक्का में तो प्री पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है. शी हैज बीन इन न्यूज फॉर सो मेनी थिंग्स नाउ. अगला नाम लिखो मर्तांड वर्मा. मर्तांड, MAR THANDA, मर्तांड, MARTHANDA, वर्मा, VARMA, मर्तांड वर्मा.
ये किस लिए पॉपुलर है जी? फेमस किस लिए है इस टाइम पे, जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं? He is one among those few kings or rulers from India who fought against the Europeans, and he is famous for his fight against the Dutch. Right? So लिखो Travancore Dutch War. He is the ruler of Travancore. Travancore Dutch War. Martand Verma is famous for Travancore Dutch War. और यहाँ पे लिख दो Battle of Colachel. Battle of Cola, C-O-L-A-Chel, C-H-E-L, Colachel, 1741. Battle of Colachel, 1741. अब ये स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है? फ्रॉम वेयर द स्टोरी स्टार्ट्स दैट द डच एंड मर्तांड वर्मा दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट. एक पहला फैक्ट याद रखना, मर्तांड वर्मा, ये लिख लो अपने पास, मर्तांड वर्मा's expansionist policies. That means he wanted to expand into the entire area around Travancore. मैसूर के नेबर में पड़ता था किसी टाइम पे, टीपू भी इनसे लड़ेंगे आके, राइट? Expansionist policies threatened the Dutch interests. Threatened the Dutch interest in the Malabar region. In the Malabar region. और यहाँ पे एक ही तो डच इंटरेस्ट था, स्पाइस ट्रेड. और मर्तांड वर्मा व्हाट ही वांटेड टू मोनोपोलाइज और कंट्रोल द एंटायर डच दिस स्पाइस ट्रेड. फॉर व्हाट? यू नो व्हाट ही वांटेड? व्हाई शुड द डच हैव मोनोपोली ऑन दिस स्पाइस ट्रेड इन दिस रीजन? व्हाई कुडंट आई सेल द गुड्स टू अदर यूरोपियंस हु आर रेडी टू ऑफर मी बेटर रेट्स? And Dutch wanted to monopolize so that they can buy it at the cheapest possible prices. Now there are so many small principalities in this area. Now if all the smaller players look, forget about the names of the smaller entities here. The issue here is if all these smaller players they side with the Dutch, then they become the enemies of Martand Verma. But if they side with Martand Verma, he becomes the strongest king and he will annihilate their freedom. Now all these local kings, they will support the Dutch against this expansionist policy of Martand Verma. If Martand Verma will win against the smaller kingdoms, he will become the bigger king. The Dutch are the not only one who are having any problem against this, even the British were against this. That is why, despite being the enemies of the Dutch, even the British did not support Martand Verma. Otherwise, many Europeans were supporting the Indian rulers against their European competitors. But realizing that Martand Verma is a strong personality, and you know, at one point of time to a Dutch ambassador, Martand said, my next plan is to attack Europe. So the all European powers present in India, they had a kind of fear against Martand Verma. So everybody was supporting the other Europeans instead of supporting their Indian counterpart. Right? So अगला लिखो. अब डच को इनवाइट किसने किया? हु इनवाइटेड डच टू कम अगेंस्ट मर्तांड वर्मा? बेसिकली मर्तांड वर्मा इज एन एक्सपेंशनिस्ट रूलर, वो अपने आसपास के स्मॉलर किंग्स को ही इज थ्रेटनिंग. सो नेक्स्ट पॉइंट, रूलर ऑफ देशिंगंड, DESHINGANAD requested Dutch support against Travancore. डच सपोर्ट अगेंस्ट त्रवनकोर. अब यहां से डच और त्रवनकोर के बीच में देयर स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू व्हेन वन ऑफ द लोकल स्मॉलर किंग्स sought the Dutch intervention when Martand Verma threatened their territory. अब Dutch have involved themselves in the area. अब let's take an example. If this is the area, one king has already invited the support of the Dutch. Now, in the neighboring yet another smaller kingdom, there was a princess. The Travancore as a state always had an eye over that smaller state as well. So, king is old, no son. There is a possibility that the princess will become the queen. So, before she takes over as the queen, Martand Verma started planning things to interfere in that state as well. Now, this princess, she ran away and reached the Dutch. And even she asked the Dutch for support. When she asked the Dutch for support, Dutch requested Martand Verma, "Yaar, can you please make this girl the queen of this area?"
and he refused. Now Dutch are more aggressive, understanding कि यार इसका तो plan है to have more control in the area so that he can deny us the trade in the spices. So that then led to the complete war. So अगला लिख लो. When the Dutch asked Martand Varma, when the Dutch asked Martand Varma to allow Princess Swarupam, Princess Svarupam, get her deserving position. Get her deserving position. He declined, and thus a war started in November 1739. Now look at a coincidence of Indian history. While in South India, you are fighting the Dutch, right? 1739, in South, you are fighting the Dutch. The strongest player of South is fighting the Dutch. And the weakening of the Mughals had brought Nadir to Delhi. So Delhi is being sacked by Nadir. In South, the Europeans are teaching lessons to the weaker Indian powers. So India's political breakout or the breakdown of the central authority had made different players play different politics in different regions. Had it been the strong Mughals and South controlled by the strong Mughals, their army presence here would have defeated the Dutch and they could have withstood the Nadir's invasion from Iran. But both the wars were defeated finally. And India, penetrated by the Europeans on this side as well and this side as well from 1750s onward. Plassey के battle के बाद तो सारा कुछ ही change हो गया. So it's a story of less than 20 years now that India will be completely under the British or the European control. ठीक है? Next point. So princess का नाम, princess name is Svarupam, Svarupam. Now, so unfortunate are the facts in Indian history that lack of unity. That Chanda Sahib, you remember, who had been supporting the French as well against the British, and the Chanda Sahib's father-in-law, who was he? Nawab of Arcot, Anwaruddin. Now that Chanda Sahib, while he was not in a position of Nawab, he was still from the royal family of Arcot. He is the one who supported Dutch in this battle as well. Even Chanda Sahib supported the Dutch against Travancore because of their expansionist policies. So this is the story that in India, there had always been so many internal disputes between the neighbors that Europeans always found it very easy to penetrate into any region and seek support from the local rulers. Right? Agla likho. However, Martand Varma defeated the Dutch in the battle of Colachel, 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 August 1741, and asked the Dutch to become friends against the rise of French. So he remains the only player in India जिसको Dutch defeat नहीं कर पाए, right? Even though the Dutch did not agree to his terms and conditions, but Dutch were never in a position to defeat him. And finally, after the going of the main governors of the Dutch, they signed one again treaty with this man, Martand Varma, and agreed to remain friends. और वो सारा trade इसके through करते रहे. So he is the only one to have his edge over the European merchants. Done. तो ये दो important facts थे जो इस बार आजादी का अमृत महोत्सव से मैंने तुम्हें ऐड करवाने थे. बाकी अभी आगे और भी आएंगे फैक्ट्स जो आजादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड है, बट आई होप कि इन दोनों में से कोई एक नाम तो इस बार पेपर में दिखेगा, बिकॉज दोनों को बहुत सेलिब्रेट कर दिया. ऑलराइट, अब
थ्री कर्नाटिक वॉर्स, इसके बारे में तो आती मैंने स्टार्ट किया था। तो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उन्हीं के थ्रू लेट्स स्टार्ट द सेकंड टॉपिक। In the beginning of 18th century, English and French were competing with each other to establish their supremacy in India. The three Carnatic Wars. Downfall of Mughal Empire led to independence of Deccan under Nizamul Mulk. The Carnatic region, though nominally under Nizam suzerainty too, was ruled by autonomous Nawab. Carnatic mein Anvaruddin. Now the entire south is breaking because of the weakening of the Mughal Empire. That gives a chance to the British and the French to interfere in the internal politics. Weakening of the Mughal control and dividing of the empires between independent entities. First Carnatic War. इसका cause क्या था? The cause of the war was outbreak of Austrian War of Succession. अब ना दो तरीके से they can ask you a question in two different ways. एक तो सीधा पूछेंगे तीन कर्नाटिक वॉर्स, तीन कॉजेस, मैच द फॉलोइंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर्नाटिक वॉर, और परहैप्स अबाउट द एंटायर कर्नाटिक वॉर. दे कैन पुट 4 इवेंट्स और तुम्हें बताना होगा इनमें से क्या ट्रू है क्या फॉल्स है. या तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलरेडी करेक्टली मैच और नॉट करेक्टली मैच, या यू मैच द फॉलोइंग 1 2 3 ABC, यू हैव टू मैच देम, या ये वाला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और नॉट ट्रू. एक तो ये हो गया. दूसरी एक चीज वो क्या पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटिक वॉर्स और इंडियन वॉर्स स्टार्टेड बिकॉज ऑफ अ रीजन बियॉन्ड इंडिया. सो दिस इज अ रीजन बियॉन्ड इंडिया. In India, there is no reason that the British and the French have to fight each other. There was Austrian War of Succession. Austria during those times was a great power internationally. It was Habsburg Empire that controlled much of Italy, much of Germany, Serbia, and parts of this Italian peninsula. So that was a very huge empire, Austro-Hungarian Empire. Now, because they were a great empire in Europe, and you know, even at the times like when French Revolution will come to an end, 1814-15, when Napoleon will die, Prince Metternich of Austria, he will be the chairperson of the peace conference. So all the powers will come to Austria, and Austria will decide that how the things have to go. Then after that, when in 1830s, when the French Revolution will again start and entire Europe will be rattled by a revolutionary wave, it will be Metternich who will control the situation in Europe. Then 1848, when the revolution will again start from France, now people will first revolt against Metternich, and then Europe will see the rise of democracies. So Metternich or Austria had been a very great player in European politics, at least up to mid of 19th century, up to 1850s. Now that Austria has been such a great power, so let's say I am sitting as a king of Austria. Now, if I become friends of Britain, so Britain will be more powerful in European politics. And if I become friends with French, so they will become more powerful in European politics. So both of us are interested in having a person of our liking or our choice on the crown of this Austrian Empire. The king has died. There is a war of succession. 2 persons from the same family are fighting. Because they are fighting to be the king in Austria, one person is supported by the British, the other is supported by the French, because of their ulterior purpose that our friend becomes the king in Austria and we become more powerful in European politics. Now that they are supporting opponents, so obviously they are on the loggerheads. They are fighting with each other as well. They were fighting in Europe for Austria's king, because both the factories, both the companies of the British and the French, they were present in India. So it's natural that if you are fighting in Europe, you have kind of animosity with each other. Allow me one word in Punjabi, right? And then you will understand. I will try to translate. It is something like that. मैं गुरदासपुर ਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸपुर वाले ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ, मैं नहीं कहना ओए साडे बंदे ਦੇ हथ, वैसे ही लड़ पड़ेंगे, है ना? इतना तो होगा ना. जे किसी इतना भी है, देखो अभी हम तो पंजाब से हैं, ਜੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਚੱਲ ਮਜਾਲ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ, है ना? उनके लिए what it is like British East India Company sitting in India looking at the French. Oh, how dare you attack the British in Europe? And the French sitting in India talking to the British. How dare you challenge the French authority in Europe? तो ऐसी बातों में ही, है ना, बुलिंग कर दी एक दूसरे की, and from there started the war. British had always been superior in navies.
तो ब्रिटेन तो समुद्र में ही लड़ेगा, दे विल नेवर ट्राई टू फाइट ऑन लैंड. फ्रेंच ड्यूप्लेक्स, ही न्यू वी आर स्ट्रॉन्गर एज एन आर्मी, वो लैंड पे लड़ेगा. while he will fight on the land, he will capture Madras factory of British. Now the Madras factory is captured, British have no alternative but to go to the Nawab of Arcot, Anwaruddin, and जाके रिक्वेस्ट ही करनी है ना, सिंपल. क्या बोलना है, जहां पना जिले इलाही, जितने तुम्हें हिंदी के वर्ड सिखाए हैं पिछले कुछ सालों में, तुमने वही यूज करने हैं. यू विल शो ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इंडियन रूलर. We were doing trade with your permission, my highness, my lord. And who are these French to capture our factory without your cognizance? अब इतनी इंग्लिश तो अनवरुद्दीन को समझ नहीं आई होगी, पर वो खुश बड़ा हुआ कि इतना कुछ मुझे कह रहे हैं ऐसे ऐसे करके, माई लॉर्ड, माई एक्सीलेंसी, यू द ग्रेट अनवर, विदाउट योर कॉग्निजेंस. कहना वो की हुंदा है, फॉरगेट अबाउट इट, वी आर जस्ट प्रेइंग टू यू. अनवर देन विल सेंड हिज आर्मी टू फाइट द फ्रेंच. This will be the turning point in the history of India. When Anwar sent his army to fight the French army, despite the fact that the French soldiers were very few and the Nawab's army was huge, the French were more disciplined, more trained, and better equipped. They outdid the huge army of the Nawab. For the first time ever, a Nawab's army in India has been defeated by a European. इससे पहले तो कोई यूरोपियन ने किसी इंडियन नवाब को हराया नहीं है. अभी तो हमने पढ़ा ना कि मर्तान वर्मा भी नहीं हार रहा. आज पहली बार a European army has prevailed over the Indian army, and the underbelly, the softness of Indian armies has been exposed. Now the Europeans can plan the conquest of India. They have realized कि भाई हजूम आता जरूर है, huge army आती है, but neither they are disciplined, nor they are trained, neither they have their equipments to face the European onslaught. So the lessons are learned. Now we will plan more wars. But who has learned the lesson? The French. Who will be the first to dream about Indian empire? The French. Duplex is the first to plan that, okay, I will create a French Indian empire. How unfortunate it was for the French that they recalled Duplex after this. And then they called back Duplex, but he has left behind a great message. There is a possibility of an Indian empire. The British will live it. They will be the one who will create it. So idea of French Duplex will be lived successfully by the British under, complete the sentence. The French idea of duplex, of having an Indian empire, will be lived by the British under, very good, Robert Clive. Clive is the man who will lay the foundations of British Empire after Plassey and Buxar with the conquest of Bengal. Story is clear? All right. Now there is a question by Arpit, why British and French were always enemies? यार तेरे चक्कर में मुझे एक बार इसको बंद करना पड़ेगा, फिर वापस इस पे आता हूं मैं. बट जस्ट टू शो यू दैट व्हाई दे वर ऑलवेज एनिमीज. Before I give you answer to this question, you have to give me an answer to another question, and then I will try give you answer to your question. Right? So here are the maps of the world. So I will ask you a very simple question, Arpit. Once you answer this question, I hope you will get your answer automatically. Why India and Pakistan and India and China are always enemies? Arpit, why are these two players always enemies with India? Immediate neighbors, Britain and France. And then we have another thing to know about in the world history. Australia and New Zealand. They are also enemies. जितनी टेंशन इंडिया पाकिस्तान मैच में होती है, उतनी टेंशन इन दोनों के मैच में भी होती है. हमें पता ही नहीं होता, बिकॉज हमारे लिए मैटर ही नहीं करता. उस दिन ये कह रहे थे मर जाएंगे, टीवी तोड़ देंगे, और ये जीत गए. आज तो एग्जैक्ट फीलिंग चल रही होती है उस दिन भी. डन. अर्पित हो गया क्लियर? And Samutri was not defeated. Samutri welcomed them, agreed to many of their demands, and then yielded to them. Okay? It is not that he was defeated.
चलो कर्नाटिक वॉर में आ जाओ आप. Let's finish it. Causes of the war was cause of the war was outbreak of Austrian War of Succession in Europe. The French attacked the English in 1746. The English sought help from Nawab of Carnatic Anvaruddin, but the French concluded a treaty with his rival Chanda Sahib. In the meantime, the Treaty of Aix-la-Chapelle was concluded in 1748 to end Austrian Succession War. Thus, the First Carnatic War came to an end. अब अगर तुम्हें याद हो कि the war started because of Austrian War, it ended because of Austrian War. British prevailed in Europe. British defeated the French in Europe. Because British prevailed in Europe, so if I am the king of Britain and he is the king of France, now I have defeated his armies. So I can instruct him to do this in India as well. So Madras was given back to the British East India Company. Even though the French have occupied their factory at Madras, that had given them an upper hand, but now they have to give it back to the British. So we can say that the end of the war was beneficial to none, because British had Madras, British have Madras. French did not have Madras, they do not have Madras. So who has gained anything? Nothing. It is a status quo after First Carnatic War. None of them gained anything. Then we go to Second Carnatic War. So it is 1749 to 1754, and the First Carnatic War is 1746 to 48. If the First Carnatic War had a global reason behind its outbreak, that there is Austrian War of Succession, and it was ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle. I will show you one more thing after the break, that I have made another table for all these wars for your quick revision. I will share it as well today in the WhatsApp group. So the second war, when started in India, there was no global reason. There was no reason that these two companies would be at war for it. Now, what happened exactly? Let's try understanding a quick story, which I have already told you in the main batch as well. The story is simple. If I am the French governor Duplex, what I've realized that this man, the Nawab of Carnatic, Anvaruddin, he supported the British. So he has become an eyesore for me. How can I tolerate him? And meanwhile, I know that one of the family members of his, Chanda Sahib, is an ambitious man who wants to become the Nawab. Now, can I provocate his person, Chanda Sahib, to become the Nawab? And can I say him, okay, I will support you with every possible way. And if you become Nawab, you have to do only two things: banish the British, give all privilege to me. And this way I will start having my foothold in India, and I will make British French Indian Empire. So I started, me is Duplex, the French governor, I started provoking Chanda Sahib against Anvaruddin. Now, if French are doing this, the British understand the game and they have to support Anwar. If they will not support Anwar, they will lose the area and trade privileges in Carnatic. So now supporting Anwar and supporting Chanda brings British and French against each other. This will lead to Second Carnatic War. While they are planning it in Carnatic region, all of a sudden the Nizam of Hyderabad died. When the Nizam of Hyderabad died, Nasir and Salabat, the two men, they are now vying for the Nizamship. One will be supported by British, other by French. So this will lead to the Second Carnatic War. Let's look at this. As the English and French continue to take opposite sides in the internal politics of India, it resulted in the Second Carnatic War. Duplex supported the cause of Muzaffar Jung, who wanted to become Nizam of Hyderabad, and Chanda Sahib, an aspirant for the throne of Arcot, Carnatic. The allies defeated and killed Nawab Anvaruddin. After this victory, Muzaffar Jung became the Nizam and Chanda Sahib Nawab of Arcot. French officer Bassi was stationed in Hyderabad. This name, French officer Bassi, it has been asked in the pre twice already, right? It is important personality. Now, can you tell me something about this Bassi and its importance? Anything that you remember about Bassi from the old lectures? देखो, simple है. When Duplex was called back during the Second Carnatic War, he asked Bassi to stay at Hyderabad, keep stationing at Hyderabad, because if you leave Hyderabad, British will enter and we will lose any point in South India. But when the new governor came, Count the Lally, he made the biggest blunder. It is recorded in history, Lali's blunder. Blunder is to call Bassi out of Hyderabad. The moment Bassi was called out of Hyderabad, the British captured these areas as well.
and the French lost all the hopes of having any Indian empire in future ever again. Right? So calling Bassi out of Hyderabad by Lali, the successor of Dupleix, was the biggest mistake made by the French administrator in India. Done. Muhammad Ali, son of Anwaruddin, escaped to Trichinopoly. The English now supported Muhammad Ali and captured Arcot under Clive to relieve besieged Muhammad Ali. Chanda Sahib was captured and beheaded. अब यहाँ पे ना मैं तुम्हें वो स्टोरी एक बार फिर से सुनाऊंगा जो मैंने मेन बैच में सुनाई थी, because that story is very relevant, very important, and brings many events and many important personalities. Now look at this. Initially, Dupleix, the French governor, is successful at both the places, be it Hyderabad or Karnataka. His supported candidate in Hyderabad and in Karnataka have become Nizam and Nawab respectively. Then what happened next is, what they have done, they first captured Karnataka, got Chanda Sahib in their hands, along with Chanda's army, supported with French army, they came to Hyderabad and brought their candidate in the office of Nizam. Now, while they are at Hyderabad, it is three armies together at Hyderabad. The armies of Karnataka, Chanda Sahib, the French army, and the armies of Nizam of Hyderabad. Now, the senior British officers, they had a plan, let's attack Hyderabad and take revenge. Clive, who happens to be a junior officer at that time, he gave a new plan. He said, if we go directly to Hyderabad, it is very strong enemy presence here. Three armies stationed together, difficult chances to win. We have to play a mind game here. Let's do a small thing. First, send a small contingent to Chanda Sahib's territory, Arcot. The capital city is Arcot. We are not to fight. We have to just besiege Arcot. We have to create the panic in the mind of Chanda Sahib. Once we besiege Arcot, the capital city, Chanda Sahib will obviously rush back. While coming back, he will take some of the French contingents with him. Now that they together come back for Arcot, this army turn against them, send an other small contingent who will trap them here, defeat them from both the sides. Right now, Hyderabad is vulnerable. Send your main army for assault to Hyderabad. Now, this plan was followed on the advice of Clive. Exactly, Arcot was besieged. Chanda Sahib came back and he was killed. The British got back Karnataka. The French are still at Hyderabad, but Dupleix called back and peace treaty of Pondicherry signed. British have defeated the French and taken away the credit of their having control over Arcot. Now this is a turning point. Dupleix is gone, the man with the vision, and Clive becomes the hero of history, and he's called Hero of Arcot. This is the name given to Clive because of this plan or strategy that he made during Second Carnatic War. He popularly started to be called Hero of Arcot. All right. Next is, meanwhile, Dupleix was replaced by Gaudieu as the French governor, and the war ended with Treaty of Pondicherry 1754. So two Carnatic wars are over by now. Third Carnatic War. Count de Lally is here. This man. So outbreak of 7-year war in Europe led to Third Carnatic War. If First Carnatic War was because of European event, Austrian War, the Third Carnatic War is because of 7 years war in Europe. Again, the British and the French are on opposite sides. This time, the war is mainly because of Americas. The French controlled Canada at that time, and British controlled America, and there was a kind of conflict between the British in America and the French in Canada. The war started, and the British defeated the French in the Canadian region, and British got control over Canada. Because they were fighting in Americas, they also started fighting in India, as it happened because of Austrian War. And this time the British also defeated French in India. So after Third Carnatic War, it is not that the British became more powerful in India, the British became more powerful internationally. They got not only strong hold of America, they got control over Canada as well. So they are now very powerful. But history has one more fact from global facts. After the 7-year war, 1763, when French were taken away or they moved out of Canada,
Now the people of America, they started fighting for their independence, and within next 13 years, America will become independent. Now that America became independent, Britain lost one strong colonial possession. Britain will become more serious for India. This is the time when the American War of Independence is fought. American War ended in 1783. America became independence, got independence. 1784, Pitt's India Act was passed, and India was brought under parliamentary control strongly. Because Britain lost America, Britain will focus directly on India now. So they say, where with the American War of Independence, Britain lost one colonial possession, its focus on another shifted there and then. So now the entire focus is on India. So they will now make all policies keeping India in the mind. Done? All right. So County Lally was the commander of French troops. He recalled Bassi from Hyderabad, which I said was the greatest mistake. And British General Sir Eyre defeated Lally at Vandewash in 1760. By next year, all French possessions, including Pondicherry, were captured by British. 7-year war came to an end with Treaty of Paris, 1763, and Third Carnatic War also ended. The French were forced to cease all their political interest in India, but were allowed to retain their purely economic interest confined to only Pondicherry, Karikal, Mahe, and Yemen. यहाँ पे फिर वो independence तक बैठे हुए हैं, right? And thus the Anglo-French rivalry came to end with British success and French failure. अब ये हो गया हमारा ब्रेक तक का टाइम. यहाँ पे थोड़े से कॉजेस समझ के then we'll start with British conquest of India, Plassies and Buxers. इनमें कुछ नए फैक्ट आजादी का अमृत महोत्सव के मैं साथ साथ ऐड करवा दूंगा. ये लेक्चर फर्स्ट डे में जब हमने किया था क्लास में, it took us 1.5 lecture of 3 hours. Today it has taken us less than 1.5 hours. फैक्ट्स भी रिवाइज हो गए. ब्रेक के बाद मैं तुम्हें वो टेबल भी दिखाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया, सो दैट कोई भी ट्रीटी आए तो तुम्हें उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता हो. डन.
Chandan sir, there was only it was a 10 minutes break, as I said, and I'm back in 10 minutes. Right, Chandan? And Shantanu, you will get recorded, don't worry. All right. So before we start, जिन लोगों ने पहले मॉडर्न इंडिया मेरे साथ की हुई थी, how much benefit you get out of this first 1.5 hour? वैल्यूडेशन तो 3 चीजें हुई होंगी. क्विक रिवीजन के लिए पूछ रहा हूँ. How much value you get out of these first 1.5 hour? क्विक रिवीजन के लिए और वैल्यू एडिशन के लिए. ठीक है. अब जिन्होंने इससे पहले मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ी वो कितने लोग हैं? तुम्हें क्या लगा बैठ के क्लास में? टेंशन हो गई? तुम्हें टेंशन नहीं हुई? समझ आना शुरू हो गया? So you feel comfortable. Online तुरंत रिवीजन हो गई. यार बेटा मैं व्हाइट स्लाइड से कुछ दिखाऊंगा नहीं, क्यों घबरा रहे हो? अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने कुछ भी व्हाइट स्लाइड से. वो तो तुम्हें कुछ वैसे ही दिखाना है. श्रेय मेहता, you think you need any book now? यार, do you have even time? शीदे आजम, यार सारी दुनिया में ना गल भी कर रही है तो तेनू मैं सुन नहीं रहा, कितना पॉसिबल है? Then don't ask for books. चलो अब ना यहीं से कंटिन्यू करते हैं और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को भी कंप्लीट करते हैं. आज 4 दिन का लेक्चर होता था रूटीन में, ये जो आज 1 दिन में खत्म हो रहा है. 4 days in 1 day और विद एडिशनल फैक्ट्स. एंड द टेबल दैट आई वाज टेलिंग यू ना, वो ये टेबल है. देखो इसमें ना कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, पहले तो बैटल्स के नाम आ जाएंगे, फिर उसके कॉजेज लिख दिए जो मैं तुम्हें बोलता तुम बना लेना, और बहुत सारे लोगों ने कभी नहीं बनाया था. सो आई विल नाउ शेयर इट बिकॉज आई नो अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है. फिर इंपॉर्टेंट पर्सन एंड इवेंट्स जो उसमें इन्वॉल्व थे उस बैटल के साथ. देन आउटकम एंड ट्रीटीज और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. So what we have done, I will be putting this table in your WhatsApp group after the end of the class. प्लासी है, प्लासी के बाद बक्सर, बक्सर के बाद सेकंड मैसूर वॉर, थर्ड मैसूर वॉर, फोर्थ मैसूर वॉर, सॉरी फर्स्ट मैसूर वॉर भी थी इसमें, वो मैं दिखानी भूल गया तुम्हें. प्लासी, बक्सर एंड देन उसके बाद यार चल रहा है यार, क्या प्रॉब्लम है? मैसूर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में गिविंग फैक्ट्स, एंड देन नहीं सारे को आगे सीधा सिख वॉर पे आ गया. राइट. सिख वॉर के बाद इसमें नेपाल की लड़ाई, बर्मा की लड़ाई, जितनी वॉर्स आज तक हुई थी वो सारी करके एंड में फाइनल क्विक रिवीजन के लिए 19 वॉर्स, देयर ईयर्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नर्स. क्विक फैक्ट रिवीजन के लिए किस गवर्नर के टाइम पे कौन सी वॉर हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस वॉर और नॉट. ऊपर सारे थे, सिर्फ गवर्नर्स के नाम मैंने नीचे डाल दिए. डन. सो ये डॉक्यूमेंट तुम्हें मिलेगा. अब इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कल का टेस्ट होगा. राइट. तुम ये डॉक्यूमेंट अच्छे से रिवाइज करोगे आज, कल इसी के बेसिस पे तुम्हें मैं 10-15 क्वेश्चंस दूंगा क्लास में, यू विल सॉल्व देम, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट टॉपिक अब क्या होगा इसके बाद? इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, इकोनॉमिक, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरीज, वो सारा कल की क्लास में हम करेंगे. लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, परमानेंट सेटलमेंट, रॉयतवाड़ी, महलवाड़ी. कल 2 टॉपिक और कवर कर देंगे, सोशल इम्पैक्ट और साथ में इकोनॉमिक इम्पैक्ट. साथ में एक नया टॉपिक कराऊंगा जो पहले किसी बैच में किया नहीं हुआ था, क्योंकि वो मैंने रखा इस कोर्स के लिए होता है. इट विल बी पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन इंडिया. कैसे पुलिस फोर्स इवॉल्व हुई, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज इवॉल्व हुई, कैसे जुडिशियल सिस्टम इवॉल्व हुआ, उस पूरे के ऊपर एक डिटेल्ड नोट बनवाऊंगा. और साथ में आई विल मेक अ डायग्राम ऑन द बोर्ड कि प्रोविंशियल कोर्ट्स ऐसे बनी, उसमें ऐसे जजेस अपॉइंट हुए, इस तरह पुलिस एक्ट आए, 1861 का पुलिस एक्ट आ गया, साथ में जितने वो एक्ट पास हुए थे बिफोर 1827 लेजिस्लेटिव, वो कर देंगे. सो इट विल बी अगेन एन इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ अ लेक्चर जो परसों का होगा. परसों मीन्स संडे. इस संडे को तो क्लास नहीं होगा, अभी शुरू हुआ है, अभी नहीं एकदम से बर्डन करता. मैराथन सेशन मैं तुम्हारा लूंगा जिस दिन फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे होंगे, उस दिन करेंगे. परहैप्स नेक्स्ट सैटरडे 7-8 घंटे की क्लास रखेंगे. उस दिन चाय भी पियेंगे कुल्लड़ में, ठीक है, चाय सुट्टा बार टाइप्स.
और जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए मैं कूपन भेज दूंगा रिचार्ज करने के, मोबाइल के 10-10 रुपए के। ठीक है, उदास मत होना कि सर हमें कुछ नहीं मिला। शहीद आजम को आवाज नहीं जाती भी मेरी, यार मैं की करा। कितना समझावा मैं जवाकां नूं। इत्थे लिख दिया, जिस दिन कोविड स्टार्ट हुआ था उस दिन मैंने पहली बार बच्चों को ये बताया था। एंड नाउ इट्स बीन मोर देन 2 years। मुझे आज भी बताना पड़ता है, ज्वाइन भी दौड़ियो तो सुनेगा। शहीद आजम, शहीद आजम, आई आवाज? एक तो तेरा नाम लेने मैंने भगत सिंह जी याद आई जा रहे हैं। दस शहीद आजम तो है लिखा तू। दस मैनू कितना की काका तू पहले दस, व्हाट यू हैव डन टू कॉल योरसेल्फ शहीद आजम? ठीक है अर्पित, थैंक यू। अब करना क्या था हमने, वर्ल्ड मैप बंद करना है, ब्रिटिश कंक्वेस्ट कंप्लीट करनी है और उसके बाद घर जाना है। और वो मेरा कहाँ गया जिससे मैं स्लाइडर पे टाइलेक्स यूज करता हूँ, वो क्यों नहीं खुल रहा है? मांझा यार, थोड़ा ज्यादा मांझा। कुछ कर सकता कोई मेरी हेल्प? या तेरे चो कोई टैक्स सेवी बंदा जो बैठा है कि सारे मेरे जैसे मातड़ी हैं? इज देयर एनीवन हु कैन ब्रिंग दिस अप फॉर मी, और शैल आई कॉल माय टीम फॉर दिस डिफिकल्ट टास्क? वो कह रही उसको यार तू यार हेल्प कर दे यार, है ना? इसी को बोल रही थी, कर दे यार अगर आती है तो, नहीं तो मुझे बाहर से नहीं। ये कहाँ छुप गया, क्यों छुप गया ऐसे? ये इसको क्या हुआ? रुको, let me call someone. This shows that how outdated I am now, how badly outdated I am. बिना माइक ऑन किए हुए
ऑल राइट जी, आई होप आई एम ऑडिबल। डन। चलो अब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट खत्म करते हैं, फिर घर भी जाना है और स्नैपचैट पे मेरे को भी स्ट्रीक स्टार्ट करनी है। 1000, मैं तो इंस्पायर हो गया यार आज। 1000 का मतलब कि एक दिन में एक दिन होती है ना। 3 साल हो गए तेरे को ऑलमोस्ट डेली किसी को फोटो भेजते हुए। ये देख, इसको टेंशन हुई कौन है। ये और टेंशन हो गई अब। एक नहीं है, ज्यादा है, ये और टेंशन वाली बात है। हट जाओ यार, पढ़ लो। आज थोड़े दिन के लिए अपने आप को समझा लो। अच्छा, मैं तुम दो सबको आज कहते हैं ना इंसेंटिवाइज करता हूं। बिना आईएएस बने कितनी भी स्ट्रीक्स बना लो, कितनी भी इंस्टा अकाउंट्स बना लो, कुछ नहीं होने वाला। फिर आईएएस बनो, उसके बाद आओ वापिस, फिर फॉलोअर्स देखना। अभी आज ना सुबह मैं किसी को दिखा रहा था, ओशिन इज एन एचएएस ऑफिसर ना, यहाँ की स्टूडेंट है ओशिन, एंड आई होप यू वुड हैव सीन हर इन द इंस्टीट्यूट एज वेल। और इंस्टा पे मैं उनको ही फॉलो करता हूँ जो सिलेक्ट हो गए होते हैं, वैसे मैं फॉलो भी नहीं करता, है ना। तो मुझे लगता होता है यार जो सिलेक्टेड है उन्हीं को फॉलो करो। तो वैसे ही आज ना किसी से बात हो रही थी ओशिन के बारे में, मैं कहा चलो यार उसके फॉलोअर्स ही देख लेते हैं कितने हैं इंस्टा पे। 140K फॉलोअर्स। अब तो फायदा भी हुआ कि आप 500-700 बंदे पीछे ला के तुम एवं हीरो बने फिरते हो। मेरे 500 फॉलोअर, मेरे 200 फॉलोअर, 1,40,000 फॉलोअर। इब तो बात बनी, है ना, लगा भी बंदे ने कुछ अचीव किया लाइफ में। तो भैया कुछ पहले आप अचीव कर लो, फिर उसके बाद लोगों के पीछे भागने की बजाय लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। आज के बाद मुझे अगर पता चला तुम में से कोई इंस्टा, स्नैपचैट या फिल्टर यूज करके पाउट शाउट बना के फोटो में डाल रहा है, मैं दांत तोड़ दूंगा। तेरे तो नहीं चलता काका है काम, पक्की गल है। और मैं ना वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वाला मास्टर बना जो तुम्हारे फोन मंगाएगा, पासवर्ड लाके दो, विखाओ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ की है, ਕਿਹੜੀ ऐप डाउनलोड की है, डिलीट मरवाऊंगा तेरी कल्ली ऐप ते डिलीट मारिया। डन। ये मैं करूंगा तुम्हारे साथ यहीं पे बैठ के, ठीक है। एक ऐप डिलीट करेंगे हम सारे इकट्ठे बैठ के एक दिन। चलो अब पढ़ो बैटल ऑफ प्लासी। यार इसकी तो मैं स्टोरीज बताता जाता हूँ और इसको आगे स्लाइड करता जाऊंगा सो दैट यू कैन रीड इट एट होम फॉर योर क्विक रिवीजन अगेन। सिर्फ कुछ फैक्ट्स ऐड कराने हैं, वो मैं एंड में करा दूंगा। प्लासी की लड़ाई के बारे में 4 फैक्ट्स है, सिंपल सिंपल। सबसे पहला फैक्ट है ब्लैक होल ट्रेजेडी। कितनों को याद है? ऑनलाइन हाथ खड़े करने हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी कितनों को याद है? वेरी गुड, बहुतों को याद है। चल बता फटाफट, चल बेटा तू बता दे। अब तुमने देख लिया ना फ्रिंज डिसएडवांटेज ऑफ 1000 स्नैपचैट की ब्लैक होल ट्रेजेडी भूल गई है। बताओ बेटा। हाँ जी बेटा, आपको याद है कि पढ़ रहे हो साथ साथ? वेरी गुड, क्या याद है उसके बारे में? हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जिनको नहीं याद है उनको क्विक रिकॉल कराता हूँ और एक क्वेश्चन उसके बाद और पूछना जो मैंने लिखवाया हुआ है। और वो यूजुअली 99.99% बुक्स में वो फैक्ट मिसिंग होता है। सो आई वुड लाइक टू सी तुम्हें वो रिटेन है कि नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंड, 7 years वॉर स्टार्ट हो गई है and it started in 1756, right? Now that the 7 years war started in Europe, so British and French, they are now expecting something to happen in India. They were expecting that anything can go haywire from here. Now, because both British and French had their settlements in or their presence in Calcutta, in Bengal, they had their factories in Bengal. So they both feared that yes, anytime anyone can attack, as it happened during the Austrian War of Succession, that while they were fighting, they attacked, the French attacked Madras factory. Now they were expecting anybody could do any damage to each other. Because of this, both the companies, they started fortification. What we mean by fortification here, they started bringing lots of arms into their factories.
Now, this is the time when Sirajuddaula has just become the Nawab of Bengal, and he's hardly 21 plus of his age. Lack of experience, but very ambitious, very young, and very aggressive kind of a personality he is. Now, when he came to know that the British and the French are bringing in a lot of arms in my territory, which can then spoil the atmosphere here, it can lead to some kind of catastrophic wars, and innocent people of Bengal may die. So he sent an order to both British and French to refrain. Now, French agreed for a while, but the British intentionally continued because they wanted to annoy the Nawab to create some bigger problems. Now, the main issue behind the entire dispute was abuse of dastak. Now, what is this abuse of dastak? Now, what is dastak? You remember? No. You remember? Very good. Sir, batao. Sir, it was basically for legal trade, but they were carrying the. Dastak is basically duty-free trade pass. Now, if I am a Mughal emperor, I allow the East India Company to not pay duty for trade, right? So when you pass the octroi points where you have to pay the duties, so the officers are standing there. Now they will ask, now if you are ordered by the king to not pay duties, show us some document. So they will show this dastak. Now this dastak is an official document signed by the Mughal officers or administrators under the orders of the king. Now, can you tell me which Mughal king is given the credit or is the one who gave company of trade, duty-free trade? Farrukh Siyar. It was in 1717 that the Mughal emperor Farrukh Siyar gave British East India Company the privilege of duty-free trade by paying only 3,000 rupees per annum to the Mughal emperor. Pay me 3,000 rupees annually and do as much trade as you want without paying any duty. So the problem here is these are all Indian merchants. You are other European merchants. I am the only British merchant in India. Now, all of you are required to pay prompt duties or taxes. Let's take an example. Perhaps let's say it is 18% GST on that trade, which the other Europeans and British are doing and some Indians are doing. Now, you all need to pay 18% GST. And someone's GST can be to the tune of 10,000, somebody's can be 20,000, somebody's can be 50,000, depending on the volume of trade. Irrespective of this, British are doing much trade, but paying only 3,000 GST. One time fixed GST. That means they save a lot of money. Where that money will go? To enhance their military power. Once they enhance their military power, they can outdo other European competitors, and then they can win Indian territories. So it was kind of a suicidal note signed by the Mughal emperor at that time. Now that he has signed this suicidal note, he still had a logic behind it. Now I am saying that East India Company as an entity will do the duty-free trade, right? Now you all are the employees of East India Company. You all, like, let's say India is manufacturing these mobiles, you buy it and sell it in the European markets. So you are not to pay duty on these mobiles if East India Company is buying it. But you are the employees. You all are criminal and smugglers. You buy 1,000 mobiles in the name of East India Company, another 1,000 mobiles individually in your names. 100 for her, 20 for him, depending on your investment capacity. Now that you have 2,000 mobiles, you pack them together in India and evade duty on those 1,000 mobiles, which are not the mobiles bought by East India Company. That is not the official trade. This is called private trade by the company employees. Now, on this private trade, too, you should pay full duty now, but you evaded duty, and this is abuse of dastak. How can you not pay duty on your private trade? So for Sirajuddaula, this evasion of duty on the private trade was the key issue. He wanted to tame the company, but company was already annoyed with him, and that is why they have already fought a small war, where after Treaty of Ali Nagar had been signed before the Battle of Plassey actually started. They asked the Nawab in the Treaty of Aligarh, don't interfere in our commercial privileges, right? So they have already fought a small war, defeating Nawab Sirajuddaula. They have forced Treaty of Ali Nagar on him. Ali Nagar is the old name of Calcutta itself when this treaty was signed. Now that Nawab has been defeated once, Nawab even had some grudges against the British. When they were now bringing arms, he said, now I'm not interfering in your commercial interest.
but you have to understand that I cannot allow so much of armed buildup in my territory. It may lead to any catastrophic thing. So please refrain from it. The French agreed, but the British intentionally continued. Now that the British continued in their factory at Qasim Bazar, Nawab sent his army to Qasim Bazar, and the orders were clear: bring back all the arms from there. Now that the Nawab's army reached Qasim Bazar factory of the British were few in numbers, whereas army was too huge. Out of fear, many of the British escaped to a nearby place called Fulta. फुट गए फुलटा, राइट? पंजाबी में तो ऐसे याद हो जाता था. Now if you ask me in English, I can't, right? Yes, it is Magna Carta. Nandini, it is Magna Carta. Now that they went to Fulta, very few people were left behind. They were 146 in number, right? 146 people, men, women, and children, and some old men, they were left behind. Now, when the Nawab's army reached, they are frustrated because of many factors. One factor: you have been creating troubles for us for long. Ali Nagar is one such thing. Abuse of Dastak is another thing. You unnecessarily interfering in the affairs of Nawab's administration is another thing. Now, in this heat of June, we have to come and fight with you. It's another frustration. And then many of you have already escaped. This is sheer frustration for us. And then you 146 are trying to resist Nawab's orders. Now, this is enough for them. So they decided to teach the British a lesson. And it is decided on the spot, not instructed by Nawab in any what way. So the decision is, keep them in a room for a night. We will talk to them in the morning. So 146 were put behind a bar, kind of a place in a small room, where there was a very small window available for ventilation. Now, everyone in the night tried to be as near the window to breathe properly as it could be. It's hot June month in Bengal. So there was an obvious stampede in the room. And when in the morning the room was opened up, only 23 survived, 123 died of suffocation or stampede. Now, this is called black hole tragedy. One of the survivors out of those 23 is Holwell. Now, why Holwell will be again important? This year, the government of India, in that Azadi Ka Amrit Mahotsav, as well as in that event, when they were talking about that, those events which can now, the participants can now be given the status of freedom fighters or not. So Subhash Chandra Bose in 1940 organized anti-Holwell agitation in Bengal. तो वो इवेंट इस साल न्यूज में आ गया. तो यही वाला वो इवेंट है, पर लिखवाऊंगा वो 1940 में. आज मैंने कहा था ना मैं कुछ बताऊंगा नए फैक्ट्स, तो वो इससे रिलेटेड है. So what is the fact now? Holwell is one of the survivors. When he then came out next morning alive, he then narrated this story by calling it black hole tragedy. That see how demonic the personality of Nawab is, that he in a cold blood got 123 innocent Britons killed. Now, where is the fault of Nawab? Did he order his soldiers do this? This is one thing that goes in favor of Nawab. The second thing, the dimension of the room are such that at no cost, at no possible way, in no possible way, 146 people can be accommodated. If I say I can teach 2,000 students in this classroom, will you buy that? 500? 300? At max, it can be 200. है ना, वो भी इतनी कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे. 150 के बियॉन्ड इम्पॉसिबल हो जाता है. लोग मेरे को गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं, बाहर आके ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाएगी, सर रहने दो, है ना. ऐसे ही आप क्लाइव बनोगे, उसके बाद क्या फायदा, क्योंकि सिराज तो मैं बनूंगा नहीं. ठीक है. सो अब वो जो डायमेंशन ऑफ रूम है, दे प्रूव अ पॉइंट कि दिस इज अ मैनिपुलेटेड स्टोरी. Even if it happened, it is a manipulated story as far as the numbers are concerned. Now, there was one more writer in the contemporary age. That writer was always speaking, writing against Sirajuddaula. But in his main book, he did not mention black hole tragedy. If somebody is writing everything against Siraj, then why he did not mention the factual Sirajuddaula's badness, if it at all was true? उसने क्यों नहीं लिखा? That means it's a European manipulation to prove a point that Sirajuddaula is very bad character and his elimination is much required now. So can anybody recall the name of that writer and his book? Sayyid Ghulam Hussain, and name of the book is Siyarul Mukhtikara. Right? ये मैंने नाम लिखवाया हुआ है, ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है और ये प्री में एक बार पूछा भी जा चुका है. अगर तुम्हारे पास नहीं है तो डोंट वरी, आई विल सेंड द नेम इन द चैट, जो मैं शेयर करूंगा उसमें. अदरवाइज मैंने लिखवाया हुआ है. ठीक है. सो दिस इज हाउ बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड. नाउ दैट
The beginning of British political sway over India may be traced to the Battle of Plassey in 1757. Now, with this statement, you have to remember few more facts, right? What are those facts? एक ना बड़ा important fact है, वो बोलता है, this is South India, मद्रास का एरिया और पूरा कर्नाटक का एरिया, right? Where in Hyderabad and Carnatic area, British and French started the Carnatic Wars back in 1740s. Who started this story? It was started by Dupleix. For what? He wanted to create an Indian empire. Now, the Third Carnatic War started in India in 1758, while the 7 Years' War started in 1756. While the 7 Year War started in India, Plassey happened, 1757. Before the Third Carnatic War actually started. First started the 7 Years' War, then happened Plassey, and then started the Third Carnatic War in India. That means before the Third Carnatic War started, British already won the Battle of Plassey. After winning Battle of Plassey, British got control over resourceful Bengal. Bengal was the richest province in India, and from here they got a lot of money. With this money, they increased their military presence or strength in India. That helped them defeat the French in the Third Carnatic War. So British, while being occupied in South with the French, also started establishing themselves in Bengal and were successful. So the writers say that Dupleix or French in vain tried to find key to India in South, in Madras. How to win India? They were trying to find the key to open India in South. British found it in Bengal because it was more resourceful. They got more money, they got more army, and then they can come and defeat the French, and control over entire India was established. So the key to India was in Bengal, and with Plassey and Buxar, British opened the Indian treasure for the British as a nation. Done. So ये fact अब याद रहेगा, simple. All right. क्या मतलब यार, समझ नहीं आया मुझे. स्पर्श, ग्रेट, तुम्हारा आंसर भी ठीक है, करण का आंसर भी ठीक है. कंटेम्परेरी का मतलब गगन होता है कि उनके एक साथ टाइम पे काम करना, एक साथ टाइम पर. अर्पित, हाउ टू रिमेंबर डेट्स? बेटा उसके लिए अभी तुम्हें टेबल दिखाया था ना, टेबल के साथ डेट्स याद करनी है. बट द बेस्ट रेस्क्यू ऑफ लाइफ विल बी टू नो द सिंपल फैक्ट. मुझे पिछले 10 सालों की जगह, 15 सालों की जगह, 20 सालों में कोई एक क्वेश्चन लाके दिखाओ यूपीएससी का, प्री का, जिसमें डेट पूछी गई है. शो मी अ सिंगल क्वेश्चन इन लास्ट 20 years दैट दे हैव आस्क्ड अ डेट स्पेसिफिकली. यस, दे डू आस्क अस द क्रोनोलॉजी, कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, बाद में कौन सा हुआ. दे नेवर आस्क द डेट स्पेसिफिक कि ये डेट बता दो. तो अर्पित, डेट याद क्यों करनी है? व्हाई यू वांट टू रिमेंबर द डेट? टेल मी क्विकली, फिर आगे बढ़े उसके बाद. यादव जल्दी बताना प्लीज यार. दिव्य ज्योति, यार वही प्रॉब्लम रहेगी जो एनसीईआरटी में होती थी. इफ आई कीप डूइंग दिस. अच्छा, यूपी पीसीएस में पूछ लेते हैं डेट्स. ठीक है, तरीका बताऊंगा उसका फिर तुम्हें. आई विल टेल यू द वे टू डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. ऑल राइट, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको. सो बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश का हो गया. पोलिटिकल स्वे ओवर इंडिया में बी ट्रेस टू द बैटल ऑफ प्लासी व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज फोर्सेस डिफीटेड सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल. अब क्विक क्वेश्चंस हैं, यहां से स्टार्ट करूंगा. अगर याद हुए गुड, 2 लोगों के पास आएंगे, उसके बाद ऑनलाइन जाएंगे. हु वाज द प्रेडिसेसर ऑफ सिराजुद्दौला, या whom did सिराजुद्दौला सक्सीड इन बंगाल? ऑनलाइन किस किस को पता है, टाइप करो फटाफट. Whom did सिराजुद्दौला succeed in Bengal? ओ तेरा भला हो जाए, शुक्र है. अली वर्दी. Ali Vardi Khan was the grandfather of Sirajuddaulah, and if they ask that who was the one who made Bengal an autonomous state, it was Murshid Quli Khan, right? So तुम्हें ना 3 नाम याद रखने हैं सीक्वेंस में. If they talk about Bengal becoming autonomous,
Autonomous means semi-independent. So that means it continued to be a part of the Mughal Empire, but then it was acting in an independent manner. To a large extent, they were not bothered about the Mughals. So the story of Bengal becoming autonomous started with Murshid Quli Khan, followed by Ali Vardi Khan, and after Ali Vardi Khan, it was Sirajudaulah, who then got defeated in the Battle of Plassey. Right? ये तीन नाम याद करने हैं. Battle of Plassey में Sirajudaulah was defeated. Bengal was the most fertile and the richest of India's provinces, and East India Company and servants had highly profitable trading interest in the province. That is why they always wanted to have control over Bengal. Right? The company had secured privileges in 1717 under a royal farman by the Mughal Emperor Farooq Siyar. And when anyone gets a special privilege, we call it Magna Carta. So this 1717 farman is royal order by Mughal Emperor Farooq Siyar, is called Magna Carta of East India Company. Magna Carta of East India Company. Sir, आपके लिए क्वेश्चन है. Farooq Siyar was very sick. He was very ill. Right? And because he was very sick and he wanted to get immediately married to a very young girl as well. So he was in great trouble that I am getting delayed in getting married. So to save the point, he was waiting for some good doctor and the British brought a great doctor. Can you tell me that doctor's name? Very good. किस-किसको याद है बताओ यार? William Hamilton, नाम लिख लो. He was a surgeon. Scottish था ये. William Hamilton was the surgeon who treated Farooq Siyar. हजूर अच्छे भी हो गए, हजूर का निकाह भी हो गया, इंडिया का दिवालिया भी हो गया, है ना. कंपनी को प्रिविलेज मिल गया ना कि ट्रेड कर ले, कोई बात नहीं. जनाब बीमार काफी थे, फोड़ा हुआ था जनाब के, बड़ा भयंकर फोड़ा, राइट, फिस्टुला, और कोई इंडिया में ट्रीट नहीं कर पा रहा था. हैमिल्टन आए, हैमिल्टन ने आके ट्रीट कर दिया, सर्जरी की, जनाब ठीक हुए, इंडिया लुट गया साथ के साथ ही. ले जाओ भाई, कोई बात नहीं. अच्छा, नाउ ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल राइट द नेम. The British officer with whom William Hamilton came to India. The British officer with whom William Hamilton came to India. John Surman, S-U-R-M-A-N. George Surman was the British officer who brought this surgeon to India. John Surman, S-U-R-M-A-N. Wonderful. Excellent. All right. Then the company had got this royal farman without paying taxes and the right to issue passes or dastaks for the movement of such goods. ये फारूक सियार ने permission दी है. This farman was a perpetual source of conflict between company and the Nawabs of Bengal. As I told na, why this was a perpetual conflict? Because they were abusing dastak by doing the private trade. Matters came to head in 1756 when Sirajudaulah demanded of the English that they should stop misuse of dastak. यहीं से conflict start हो गया. That who are you, 21-year-old boy? Nawab also suspected that the company was hostile to him and was favoring his rivals for the throne in Bengal, because company found him to be very aggressive and ambitious. So company always supported his rivals. The breaking point came when, without taking the Nawab's permission, the company began to fortify Calcutta in expectation of coming struggle with French who were stationed at this time in Chandanagar. So दोनों factories में हथियार ला रहे हैं. They are bringing arms. Nawab rightly interpreted this action as an attack upon his sovereignty. Like, it is not about trade now, it is about political and military decisions. And attacked the English factory at Qasim Bazar and Calcutta, but then retired to celebrate his easy victory. The English in revenge organized a conspiracy with leading men of Nawab's court, Mir Jafar, Manik Chand, Amin Chand, Jagat Seths. Now, Jagat Seths are the bankers. Manik Chand, Amit Chand are the merchants. And Mir Jafar is commander-in-chief of Nawab's army. Nawab, see, when it was Murshid Quli Khan, he was one of the officers, none of the relatives of the Mughals. Then he became the Nawab. Murshid Quli Khan's sons or his relatives did not get the position. One of his officers, Ali Vardi Khan, got the position of Nawab.
Now, why Ali Wardi's grandson Sirajuddaulah is becoming? Why can't Mir Jafar, who is one of the officer, commander-in-chief, ambitious man, why can't he become the Nawab? So he had all the grudges against Siraj that why couldn't I be the Nawab who is the commander-in-chief, and why this inexperienced young boy is becoming Nawab? So he always wanted to be the Nawab. Manik Chand and Amit Chand, the merchants, they wanted that the trade with British, as they had been carrying out in an illegal manner, it should not stop. Jagat Seths, the bankers, they have given so much of money on interest to all the merchants and even to the British. They were the richest men in the Bengal at that time, right? Living in big bungalows, हवेलियां थी इनकी और बहुत ही rich class थी, और British के they were the closest buddies. So now all they sat together and they decided that Siraj should be replaced with Mir Jafar. And in this, they got in touch with Clive. Now, when they met Clive, Clive was looking for an opportunity because of that black hole tragedy. Now, Clive had one more person from the British Army, Admiral Watson. इसका नाम भी लिख लो, Admiral Watson. Clive and Watson were together, Admiral Watson. Now, when Clive met Mir Jafar in presence of these men, Manik Chand, Amit Chand, and Jagat Seths, Clive told Mir Jafar, okay, man, I will make you the Nawab by supporting you. What you have to do when I will come with British army to fight Siraj, right? What you have to do, you have to just take away all your army. Let the Nawab be alone there. We will kill him and then we will declare you to be the new Nawab. And in lieu of it, you will give all the privileges to the company and some compensation. Then these men were taken by surprise that where is our share in the spoils? Now that they said we also want something, Clive never wanted them to get a penny out of the deal. But because they said we will spill the beans, we will tell Sirajuddaulah that you are conspiring. Now Clive talked to Watson that I can show them a fake letter that yes, we will give you something after the settlement of the dispute. But actually he never wanted to. So Watson said, sorry, I cannot make any such document. So Clive forged the signatures of Watson as well. Clive is so wicked, so conniving. He forged the signature of Watson and showed a fake letter to these men that we will give you something after the war. Now, trusting all this, they fought and Sirajuddaulah was killed. Mir Jafar became the Nawab. And when they now asked, he said it was fake letter, sorry man. Now, whom should they complain against? And to whom should they complain? So the story ended. Sirajuddaulah killed. He was killed by Miran, and Miran is son of Mir Jafar. The British did not color their hands red and they let Miran do this. The honors were for Mr. Miran. Now Sirajuddaulah is gone and Mir Jafar is the new Nawab of Bengal. And from today, Bengal becomes a puppet state because the strings of the Nawab are in the hands of the British. So they can make the Nawab and the entire state dance to their tunes. So from today, British will pay no taxes, get more and more resources and money, and then they will become more powerful to win entire India. This is clear? Us table mein, the other table that I will be sharing in the WhatsApp group, iska impact bhi likha hoga isi tarah se. Then the fateful Battle of Plassey was a battle only in name. The major part of Nawab's army led by traitors Mir Jafar, and there are names like Rai Durlab, took no part in fighting. The Nawab was captured and put to death by Miran. The English proclaimed Jafar the Nawab of Bengal. The company was granted undisputed right to free trade in Bengal, Bihar and Odisha because the Nawab of Bengal had all these territories under his control. It was Bengal, and remember this Bengal includes entire Bangladesh and parts of Assam as well. So it's a very huge province along with Bihar and obviously Jharkhand and Odisha. So it's a very, very huge province. Then the Battle of Plassey was of immense historical importance. It paved the way for the British mastery of Bengal and eventually of the entire India. It boosted British prestige at a single stroke, raised them to the status of a major contender for Indian empire. The rich revenues of Bengal enabled them to organize a strong army. Control over Bengal played a decisive role in the Anglo-French struggle as well. अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं. Let's understand this. 1757 is Plassey, right? Then
1764 is Buxar, and the British have got control over Bengal. But in the meanwhile, there are few major events that we should keep in mind. Before this, in between this time, 1763 is the year when the French were finally defeated in the Third Carnatic War. And 1761 is the year when Third Battle of Panipat happened. In this Third Battle of Panipat, now what has happened here? Mughals from 1707, the Mughals have started to become a very, very weak power. After death of Aurangzeb, Mughals were becoming weak. Now, the only player in India who was expected to fill the vacuum, they were Marathas. And Marathas were rightly believed to be the next rulers of India. They were expanding their empire like anything. They were the most strongest player in the game. Now that they were so strong, they had even made the Mughal emperor dependent on their support by claiming Chauth and Sardeshmukhi like things. And the Mughal emperor was paying Chauth to them, protection money, and they were calling the shots on behalf of Mughal emperor. Now that Mughal emperor is paying Chauth, protection money to the Mughals, at this point of time, when that man Ahmad Shah Abdali from Afghan, he invaded India against the Mughal empire, because Mughals were under the protection of Marathas. Marathas has to come all the way to fight at Panipat, right? Now that they came to fight a war at Panipat, they were defeated comprehensively by the Afghan invader. From today, Mughals are totally gone. Even the Marathas are completely weak. Now there is such a great power vacuum in India, which other Europeans could have now taken benefit of, but even they have been defeated. So who is left in the game? The British, and the next year they won Buxar and became masters. So these few events, 1757, 1761, 1763, 1764, they changed the entire course of history of India.